Hello friends, welcome back to my channel. आज आम 100 MCQs on Constitution of India करवा ना आज जी कंप्लीट हम आम ट्राए करें मैक्सिमम कंप्लीट करने जहाँ रहा नेक्स्ट पार्ट रे आपको देखा मिल समय स्टार्ट करवा फर्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस से गवर्नर आम जो स्टेट रे अपॉइंटेड होता से क्या एडवाइस रे अपॉइंट होता प्रेसिडेंट क्या एडवाइस अपॉइंट होता से प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते आम गवर्नर ऑफ स्टेट को क्या एडवाइस अपॉइंट करते प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस द प्रेसिडेंट्स गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रेजिग्नेशन टा क्या आम भाइस प्रेसिडेंट को देते फॉर व्हाट पीरियड डज द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस कौ टर्म पीरियड पर्यंत भाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के होल्ड कर पाते 5 years हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का प्लेजर वाइज कि ऑफिस के होल्ड करते से होती आम गवर्नर which of the following is not true regarding the payment of the emolument of the president कोड़ा भीतर ट्रू नुह प्रेसिडेंट को वाइज they are charged on the contingency fund of India the total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and the Rajya Sabha is आमर प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते मेंबर के जन 14 जन को which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India कौन अच्छे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोअर हाउस आमर कोटा पार्लियामेंट जोटा कि लोकसभा ऊपर हाउस कोटा आमर राज्यसभा which of the following appointment is not made by the president of India chief of the army speaker of the lok sabha chief justice of India chief of the air force speaker of lok sabha which of the following appointment is not made by the president of the president speaker of the lok sabha को appoint करते नहीं who appoint the prime minister of India प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता द फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस किए होते सी सरोजिनी नायडू मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज प्रेसिडेंटशिप मतलब प्रेसिडेंटर इलेक्शन आमको लड़ाई एज के दरकार 35 years होता दरकार as usual गवर्नर को 35 years भी होता द चार्ज ऑफ impeachment against the president of India for his removal can be preferred by the charge of impeachment against the president of India for his removal can be preferred by president को impeachment को आर्टिकल रहे आर्टिकल 61 रे से कौन आमको देखिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ओनली राज्यसभा लोकसभा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मत दरकार जे प्रेसिडेंट को हमको इम्पीचमेंट करा खेले द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेट ऑफ एग्जिट्स इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आमर इंडिया प्रथम प्राइम मिनिस्टर किए थे जवाहरलाल नेहरू इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ जिते बड़े प्रेसिडेंट को डेथ हो जाता है से जो वैकेंसी पड़ी था सीट्र से वाइस प्रेसिडेंट केते दिन पर्यटन प्रेसिडेंट को रोल हिसाब से एक्ट करेंगे 6 months मैक्स 6 months पर्यंत द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ आम जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टरटा क्या नहीं कहता है कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं कहता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को नहीं कहता है एंड डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर को नहीं क्या होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टरटा आमर गठन होता है हु administers the oath of office to the president of India before he enters upon the office chief justice speaker vice president prime minister chief justice
Who among the following enjoy the rank of cabinet minister of the Indian Union? Indian Union रे ଆମର cabinet minister जो rankଟା କିଏ ହୋଲ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି? Deputy chairman of the planning commission. Deputy chairman of the planning commission. A person who is not a member of parliament can be appointed as a ministry by the president for a maximum period of 6 months. When can a president use his discretion in appointing the prime minister? When no political authority enjoys a clearly majority in the Lok Sabha, only when the Lok Sabha has been dissolved in all circumstances or in no circumstances, when no political authority enjoys a clear majority in the Lok Sabha. If in a country there happens to be the office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarchy would be called head of the state. Okay, head of the state. One features distinguish the Rajya Sabha from the Vidhan Parishad is power of impeachment. One feature of distinguish the Rajya Sabha from the Vidhan Parishad is power of impeachment. Chief Minister of all state are ex officio member of the interstate council. ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ମେମ୍ବର ହେଇଥାଏ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ interstate council. Who among the following has the final rights to sanction the expenditure of public money in India? कि प्रथम लास्ट सांक्शन जे सांक्शन करिए फाइल के से कहाँ पाखरे से पावर अच्छे प्रेसिडेंट का हाथ अच्छे. Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? He must not be a member of either House of Parliament. He should be a domicile of the state to which he being appointed. He should be a citizen of India. He must have completed the age of 35 years. He should be a domicile of the state to which he is being appointed. The president nominates 12 members of Rajya Sabha according to their distinction in the field of science, art, literature, and social service. Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward class in general and suggest ameliorative measures? Article 340. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India, either House of Parliament, like Lok Sabha or Rajya Sabha? Who was the member of Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India? Indira Gandhi. What is the minimum age for appointment as a governor? जोड़ा गवर्नर को मैं अपॉइंट करे हेले मिनिमम एज केते होता है 35 इयर. चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू चीफ मिनिस्टर गोटे स्टेट चीफ मिनिस्टर कहाँ पाखे रेस्पॉन्सिबल था वन प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली पाखे गोटे चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल था. The administrative and operational control of the armed force is exercised by the Cabinet Committee on Political Affairs with Prime Minister as the chairman, Ministry of Defense, 3 Chief of the Army, Navy and Air Force Staffs, President. Ministry of Defense. What is the position of a Minister of State in the central government? He is a Minister of Central Government but not a member of the Cabinet. ଯେ ଜଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି. ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ମେଟର୍ସ କନସର୍ନିଂ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ସେ କିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଡିଫେନ୍ସର ଯେତିକି କନସର୍ନ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଲ୍ ମେଟର୍ ଅଫ୍ କନସର୍ନିଂ କାହା ସହିତ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେ ହେଲେ କିଏ ନୁହନ୍ତି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର.